Feast. When I say again regarding these terms, there are three terms: sewer, sewage, and sewerage. That day also I have told the difference. Sewage means the water, the waste that is removed. Sewer का मतलब होता है small pipes that come from our houses and they are joined to the another small drains or another pipes or big pipes. और सीवरेज जो है वो सबसे बड़ा पाइप है जो जाके पानी को सबसे लास्ट में डिस्पोज करता है. अंडरस्टूड? सीवेज अलग है, सीवर अलग है, सीवरेज अलग है. सीवरेज इज द फाइनल बिगेस्ट कैनाल या हम कह सकते हैं ड्रेन. अंडरस्टूड? Clarified water, what includes aerobic respiration. What is the use of the aerobic bacteria? Anaerobic. हाँ. What is the use of the anaerobic bacteria? यूज तो वहीं पर दिया है. To activate the sludge. Activating the sludge. और दूसरा To decompose the sludge. decomposing. That is used to decompose. है ना? वो जब उसको डिकम्पोज करेगा then only it is broken. Decompose करना means simple is broken into sorry complex substance are broken into simple one. The decomposing is also the same process जहाँ पर substance को break किया जाता है और उसको simple इसमें convert किया जाता है. When it is getting converted at that time gases are released and this gas is used for as a fuel. Understood? Now it is used as a fuel means it can be used for various purposes. It can be used for cooking, it can be used for lighting the lamps, it can be used for electricity, etc. Understood? So, Siddha, when we say anaerobic and aerobic, so aerobic means which is present everywhere in the air and they can respire in the presence of oxygen. Anaerobic means which cannot respire In the outside. or without the presence of oxygen. Means they produce the energy but without the presence of oxygen. For example, I told you decomposition या जो हमने गोबर गैस में देखा है बड़ा सा टैंक होता है और वो टोटली पूरा ढका हुआ होता है. तो ढकने के बाद वहाँ ऑक्सीजन कहाँ जाएगा? Isn't it? So there is no connection of oxygen. Only the whatever the sludge is there from the small pipe, it is gone to the small pipe into the big tank, and the sludge gets decomposed. Decomposition शुरू हो जाएगा ना because it is an organic matter. So decomposition starts. Now there is no oxygen, so it is anaerobic. जैसे हमारा इडली या डोसा का जो बैटर है हम रात को भिगो के रख देते हैं, ढक के रखते हैं. आपने देखा कब खुला रहता है क्या? नहीं. So after closing it or after putting the lid over it, now anaerobic bacteria they start respiring. They respire and reproduce. Reproduce होते हैं तभी तो वो पूरा जो है वो डब बड़ा होके आता है साइज में. Understood now? So respiration and reproduction because it is reproducing also inside the fermentation. So this takes place simultaneously. Is it clear now? So anybody have any doubt? Yes. So first question was which one? Anaerobic क्या? Anaerobic क्या? Bacteria का means with reference to what you have not understood. जब क्लोज कर देते हैं तो उसमें बैक्टीरिया मींस फॉर एग्जांपल ईस्ट होता है और वो ईस्ट जो है वो रिप्रोड्यूस होना शुरू कर देता है. रेस्पिरेशन.
So when they are respiring, वो reproduce होगा तो respiration भी होगा. जब respiration होगा तो it is giving off carbon dioxide. और वो जब carbon dioxide देता है तो धीरे धीरे छोटे छोटे bubbles तैयार हो जाते हैं. Bubbles तो वो they don't get the space to move, so they remain inside the duct, and the size of the duct becomes large. That is how the cake, raising of the cake, the duct takes place. जो हम स्पंज की बात करते हैं, स्पंज, तो स्पंज में क्या होता है, बड़े बड़े स्पेसेस होते हैं ना. तो ये स्पेस कहाँ से आता है? व्हाट इज दिस स्पेस नाउ? कार्बन डाइऑक्साइड. हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड. so this is nothing but carbon dioxide. Who is giving out this carbon dioxide? Humans. तू जाके इडली के बैटर में फूटेगा क्या? और फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आया है? यस महालक्ष्मी, टेल मी नाउ. Anaerobic. Bacteria. Particularly when we are talking about the this about the idli batter or dosa batter, it is yeast. Yeast is reproducing. Understood? जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके अंदर है वो है ईस्ट. बेकरी के लिए भी हम क्या यूज करते हैं? ईस्ट. ईस्ट पाउडर आता है. यस मैम. तो वो ईस्ट ही होता है. जब हम उसको पानी में डालते हैं वो एक्टिवेट हो जाता है, क्योंकि ये जो ईस्ट बोलो या जो छोटे छोटे माइक्रोब्स होते हैं, दे हैव अ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर ओवर देम. वो स्ट्रक्चर ऐसे क्रिएट कर जाते हैं ताकि वो मरते नहीं है, इसीलिए हवा में ऐसे घूमते रहते हैं. और जब उनको फेवरेबल कंडीशंस मिल गया, फॉर एग्जांपल बारिश आ गई, तो बारिश के कारण पानी मिल गया तो फिर वो जर्मिनेट हो जाते हैं या फिर वो रिप्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं. Ma'am, baking soda is also clean and safe. Baking soda. यस, उसका रिएक्शन होता है, वो रिप्रोड्यूस नहीं होता है, उसका रिएक्शन होता है. इट रिएक्ट्स विद अनदर केमिकल, एंड जैसे हमने पानी डाला, बेकिंग सोडा में पानी डाला, तो वो फिर CO2 जो है वो आने लगता है. तो ये CO2 फिर उसमें फंस जाता है, जो भी हम बैटर डालेंगे उसमें फंस जाता है, और वो पूरा बैटर जो है वो फूलने लगता है. Understood? Sit down. So first question was, yes, I told you I will give the syllabus today, but how much syllabus has to be given, that I don't know. So I will wait for today. But anyhow, I am trying that if I will get it today, I will tell you. Yesterday also I told you that I will be giving it today. My syllabus is ready. Just I want to know how much syllabus should be added from the first term. एक बार मुझे वो पता चल जाता है तो फिर तुम्हारा syllabus तो वैसे ही ready है. Okay? Yesterday I asked so many of the students to remind me. Yes, I know that. And very soon you will get your final syllabus also. Subject-wise syllabus also you will be getting. Yes, thank you students that you have reminded my today's work. So, question answers about the wastewater story. I told you to read it, isn't it? So, how many of them? Yes or no? Yes, ma'am. You don't see like that. So, wastewater story. How many of them have read the lesson? टेक्स्ट बुक सबके पास है, रीडिंग किया है. इधर तो हाथ ही नहीं उठ रहे, क्या हो गया सबको? वन टू थ्री थ्री फोर फाइव सिक्स. स्टैंड अप. हाँ, मास्क निकालो और बात करो.
You don't have textbook? Santosh, take one page and write down their names, those who don't have their textbooks. हाँ? You don't have. तो रीडिंग नहीं करोगे, टेक्स्ट बुक नहीं है तो फिर पढ़ाई भी नहीं करोगे, पढ़ाई नहीं करोगे, एग्जाम भी नहीं दोगे, है ना? इट इज लाइक दैट ओनली. टेल यस और नो. यू डोंट हैव टेक्स्ट बुक बट रीडिंग पार्ट नहीं किया है. You have not read the notes also. You are having the notes. Is it completed? You did not read. Now what you will say to them? Notes are there, but you did not read. Somebody will come and read for you. Yes, you. Put off your mask and then speak. Old book means old notebook या old textbook? You are having textbook, no? I am not asking whether it is NCERT or Prachi. Textbook है, read क्यों नहीं किया? You are having your textbook, no? He lost it. He's not able to understand. No, he lost it. अच्छा, you are not getting your textbook now. बराबर है. I have asked you to read, so you are not getting the textbook now. फिर I will ask you to read the question answers. You will not get your notebooks also. है ना? हो जाता है. फिर एग्जाम में क्या करोगे? Written. You have read the notes. Some. बाकी सम को कब? एग्जाम के बाद. I asked only one lesson to read. To read, not to learn by heart. Only reading. Listen everyone, those who are online, offline, that this time your test is physical only, exam is totally physical. No one is going to help you. फेल हो गए तो भी ऐसा नहीं कि लास्ट टाइम एक क्लास से दूसरे क्लास में चले गए. अभी कौन भेजने वाला है तुम्हें? हाँ? Yes. Nothing to speak. क्या? चलो. लिखा है कब रीड करेगा? कब रीड करोगे? Santosh, write their names, those who don't have textbooks. This side, who is not having the textbook? This side, you are not having. Reading में नहीं किया. You are having notes. Stand up and say something loudly. Read some only. And for other rest of the sum, when are you going to read? हाँ? सम करते करते अभी मार्च आ रहा है, एग्जाम कब रीड करोगे? Yes, here you are having textbook. You are having textbook. You are having notes. हाँ? कब कंप्लीट करेगा? Today, after saying, हाँ? Your notes are completed. You are not having textbook. Write your name, Santosh. So rest of them they are having the textbooks. Yes. So how many total they are not having the textbook? 5. 5 students are not having the textbook. Yes. Only 5 now.
5 only now. Because let me see, some of the reference textbooks are there in the library. I will give you, at least you read it once. NCERT नहीं है, पर मैटर वही है, ऑलमोस्ट लेसन्स आर द सेम. रीडिंग करो एक बार, एग्जाम होने के बाद वापस कर देना, ठीक है? क्लियर? सिट डाउन. सो टुमारो जस्ट आस्क मी. कल तुम लोग नहीं आओगे ना? अच्छा. So day after tomorrow. What is the date? 25. Okay. 25 को. पूछना. अगर मैं भूल जाती हूँ तो नहीं तो तुम लोग भी फिर से भूल जाओगे. बस 26 से मैं नहीं हूँ. ठीक है? So here reference books are there. So few reference books I will give you. Read करो उसको. No, not full. Okay, so first step, what is sewage now? Tell me. Wastewater. I called your name. Sir. Yes, sorry. This is test going on, oral test. I don't want such kind of answers. Tell me. Sewage is wastewater which comes from our home and it is treated. Only home. Comes from home, hospitals, Homes, hospitals. Okay. Then and it is transferred to the sewage treatment plant and there no, only I am asking what is sewage. Sit down. So you have already given the answer. It is the waste water that is generated, that is produced in our houses, offices, school, factories, etc., etc. जो भी waste water होता है, उसे हम sewage कहते हैं. Understood? Then the next question is, why is it harmful to discharge untreated sewage into the rivers or seas? Now, why treatment is very important, and or we can say why it is harmful to dispose the untreated sewage. Yes, Shardul. It has very harmful chemicals, animal excreta and feces in it, which can be very harmful to dispose of in a river, which can harm the animals. This is one part. एक point हो गया. It is very harmful to dispose the untreated water into the river bodies because it contains heavy metals, toxic waste which can pollute the water bodies and can harm the aquatic plants and animals. Okay. So 2 points are there. One thing is that it is harmful for the aquatic animals because sewage means the wastewater and water is again disposed into the water bodies only. So when we are not thinking about the animals which are living in the water, like in the aquatic animals, fishes है, reptiles है बहुत सारे और different variety of animals are there. So when this water is untreated and if it is disposed, so the animals will die. Second thing is, this is spreading, and if these germs, because sewage contains so many kinds of microorganisms as well as chemicals. So when this is spread, many waterborne diseases are spread. Waterborne diseases बहुत सारे हैं, typhoid, cholera, polio, dysentery, etc. So they are also spreading due to this. Then the next thing is that these chemicals which are harmful, they will pollute the water and the soil, etc. Understand? So this is
That is why we should treat first the sewage and then we have to throw it or dispose it. Next, why should oils and fats be not released in the drains? Yes, Cooking oils and fat will clog the bar screen. No, the drain. बस एक ही पॉइंट है. It will clog the drains. ये हो गया. दूसरा पॉइंट क्या है? Yes, ईशान, sit down. Because it may block and choke the seepage. हाँ, ये हो गया ना, clog और choke the drain. दूसरा पॉइंट मुझे चाहिए. Yes, Ma'am, it hardens pipes. वही हो गया, harden और this. Second point, what is that one which is important again? When it goes to the ground, it a layer becomes upon the soil which don't allow the oxygen and air to pass through the soil. And Correct. So free flow of oxygen नहीं होगा because a layer of oil is formed and this oil prevents the oxygen. Then if this oil gets stuck into the soil, अगर ये भी stuck हो जाएगा soil में जाके, तो soil के pores जो है वो clog हो जाएंगे. That means again the oxygen will not be passing or it is not absorbed. And then microorganisms जो है उसके अंदर soil के नीचे वो मर जाएंगे. Slowly the soil will become unfertile क्योंकि उसकी fertility will be lost because microorganisms are not there. Are you understanding? तो ऐसे बहुत सारे points हैं, एक ही point नहीं होता है. Then next, describe the step involved in getting clarified water from wastewater. So हमें clarified water चाहिए, तो कैसे आएंगे? कितने steps involved है इसमें? पहले तो मुझे बताओ, how many steps are involved? और क्या? 3 steps. Yes, how many? 3 steps to come to the clarified water. Now, how we are getting the clarified water? Who will tell? Yes, Rishi, start करो. First, we will go to the bar screens and bar screen will remove Go to the bar screen. We will go to the bar screen. the wastewater will flow from the क्या हमें bar screen से पास होना है क्या? नहीं. The sewage is passed. seepage is passed through the bar screens and the bar screens removes the materials like plastics, bottles, Racks, plastics, sticks, buckets, plastic bottles, etc., etc. So solid substances they are removed. Then and then it goes to the grind machine to hit them. which machine? Grit. Machine, and it will and The grit is removed. Grit यानी sand जो solid sand, soil, pebbles, stones, ये जो material है that is getting removed. Here the speed of the water is reduced. ये ध्यान में रखना. यहाँ पर intentionally पानी का जो speed है उसको कम कर दिया जाता है, तभी जाके धीरे-धीरे वो settle हो जाता है. Heavy materials they get settled down. So the pebbles, stones, sand, the grit material जो भी है वो that is removed. Now next is and the sludge. last. Now third step क्या है अभी? Yes. Aniket. What is the third step? दो स्टेप समझ में आ गए? पढ़ाई की? Yes, good. Then you tell me what is this clarified water? How we get this clarified water? जल्दी से बताओ. We don't have time. Remove your mask and tell loudly. Yes. Just now you told that you have read the textbook. Second last. First step, sewage water is passed to the head.
clarifier where the organic material such as phases Can anybody draw the this tank clarifier? अजब कैसे शेप का होता है वो? So this water second step say then the water is so it is taken to the clarifier. This tank is the clarifier. Actually इसे थोड़ा हम और sloping बना देते हैं like this. It is correct, but just like this. Okay. So these slopes help to settle the organic matter. तो इसमें organic matter क्या है? This is human excreta, then animal excreta. Now how many of them have understood what is human excreta? सबको समझ में आ गया? You don't know. Feces का मतलब? Not understood. Not an expert and not understood. इधर से सबको समझ में आ गया ह्यूमन एक्सक्रीटा क्या है? दिस साइड जतिन जतिन है या तेजस है? स्टैंड अप. हाँ? What is he saying? The waste we release. We human beings. तो वेस्ट भी दो टाइप के हैं. सॉलिड वेस्ट भी है, लिक्विड वेस्ट भी है. कौन सा वेस्ट? ह्यूमन एक्सक्रीटा का मतलब क्या है? जल्दी जल्दी. नेक्स्ट don't know the meaning? Yes, Ishan, you know the meaning of human excreta? Next. तुम्हें पता है? Feces मतलब पता है? They know what is that? Say it loudly. Feces का मतलब पता है? Undigested food, है ना? Undigested food, जो undigested food होता है हमारे बॉडी के अंदर, that is to be removed. And this undigested food is called as excreta when it is removed. Remove होने के बाद वो excreta कहलाता है, या it can be called as feces. Understood now? Sit down. अभी समझ में आ गया? तो यहाँ पर ये feces जो है जमा हो जाता है. Now this flow, particularly this shape is given so that the organic matter. Now feces means nothing but it is organic, है ना? हम जिसे हम मैन्योर कहते हैं, खाद कहते हैं, ये. Now the things are removed. Then from wastewater also can be wastewater also can be seep into the tank. इसका ये जो है एक्चुअली इसमें पाइप है, ये जब वो सेटल हो जाता है पाइप से इतना ये जो ऑर्गेनिक मैटर है वो रिमूव हो गया, फिर बचा है ये पानी. पानी को तो ऐसे ही हम उसको ड्रेन कर देंगे ना. The water can also seep from that pipe. It is already settled down. Now this is settled. तो हम धीरे धीरे रिमूव करेंगे, उसका भी प्रोसेस होता है ना. Understood? So only when this is settled down, जब हमने यहाँ पर उसका पाइपलाइन दिया है, मतलब सिर्फ ऑर्गेनिक मैटर ही रिमूव होगा, और ऊपर से इसका जो फ्लो है वो एकदम स्लो कर दिया है ताकि वो सेटल होने के लिए हम उसको टाइम देंगे. Understood now? So organic matter is removed. This is called as organic matter. समझ में आ गया? Now why it is called organic matter? Aniket, what are you writing? Come here. Come fast.
Yes, Ira, tell me why it is called organic. What were you writing? अभी read करने के लिए बोला है क्या तुमको? Then wrote C also. Yes. Because it is out of undigested immediate Because it can be decomposed and it can be made into biogas. Yes, it can be decomposed. Why it is called organic? But because it is nothing but the product of living beings. हमारा प्रोडक्ट हम बोल सकते हैं या जो लिविंग बींग्स होते हैं वो तो ऑटोमेटिकली डिकम्पोज होता है, बायोडिग्रेडेबल हम जिसे कहते हैं. सो दैट इज व्हाई इट इज ऑर्गेनिक. इसमें कोई केमिकल नहीं होता है. दैट इज व्हाई अगेन इट इज ऑर्गेनिक. अंडरस्टूड? सो दिस ऑर्गेनिक मैटर इज नाउ सेपरेटेड. ऑर्गेनिक मैटर को अगर हमने सेपरेट कर दिया तो फिर अभी ये जो है ये ऑर्गेनिक मैटर इट इज कॉल्ड एज sludge. Say loudly. Sludge. It is called as sludge. Now this sludge is activated by adding or by decomposing. The anaerobic bacteria act on it and decomposition takes place. जब decomposition हो जाता है तो automatically gas is released. और वो गैस है बायोगैस. अभी फिर से उसको बायोगैस क्यों कहते हैं? Because it is released from the organic matter. Organic matter is from the living beings. So organic is biogas. समझ में आ गया? काउडंग से जो रिलीज होता है that is also biogas. Human excreta से जो रिलीज होता है that is also biogas only. Because whether it is animal or human being, it is the living beings. Okay, so it is called as biogas. समझ में आ गया? Now this biogas is used as a fuel for different purposes. और जो बचा हुआ sludge है वो बाद में उसको ड्राई कर दिया जाता है, उसका भी यूज होता है. It is used as a manure. We will not use fertilizer because fertilizer जो है यूज होता है what for chemical substances, chemical fertilizers mainly. We can use it as a manure because it is purely organic. Now everyone have understood? पहले भी यही बताया था मैंने, आज कौन सा नया बताया? Is it clear? Yes. So this is all done in this clarifier. Clarifier में हमें sludge मिलता है. Sludge का यूज बायोगैस के लिए हो सकता है. बचा हुआ जो रेसिड्यू होता है that can be used as a manure. समझ में आ गया? Yes. Just you can write with your own words if you understand the process everything. Okay? Now next. Untreated human excreta is a health hazard. Now untreated human excreta is a health hazard. Why it is called health hazard? Health के लिए बहुत dangerous है. क्यों? क्या ह्यूमन एक्सक्रीटा हेल्थ के लिए डेंजरस हो सकता है? If it is यस शार्दुल. Because it can be poisonous. व्हाई? It contains, It contains toxic. because it consists of disease causing microorganisms and pollutants. डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, करेक्ट है ना? क्योंकि उसमें बहुत सारे डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं. ह्यूमन एक्सक्रीटा का मतलब जैसे कोई बीमार है और बीमार होने के बाद उसका जो एक्सक्रीटा है, इवन एक्सक्रीटा आल्सो विल कंटेन द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. एक्सक्रीटा में भी तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहेंगे ही. तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फिर से सॉइल में या पानी में मिलके फिर से और स्प्रेड होने के चांसेस ज्यादा है. तो और बीमारियां फैलने के चांसेस है. एंड आई टोल्ड यू लाइक वाटर बॉर्न डिसीजेस जितने भी है, टाइफाइड, मलेरिया, कॉलरा, ये और फैलेंगे और फैलते हैं. आपने देखा होगा रेनी सीजन में ये सब बीमारियां ज्यादा फैलती है, वाटर बॉर्न डिसीजेस. अंडरस्टूड? वेरी वेल. Yes. So tomorrow will be the revision of
जो हमारा ऊपर वाला जो लेसन है उसके पहले वाला तो एवरी डे जस्ट प्रिपेयर वन अबाउट द नेक्स्ट forest our lifeline no forest our lifeline